सो आज आम गोटे इम्पोर्टेंट वीडियो रे डिस्कशन करवा जे आम जो SSB TGT 2024 बॉटनी क्वेश्चंस सो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस वी विल डू द एनालाइज सो क्वेश्चन केमती आसी को लेवल आसी आउ तार सॉल्यूशंस कौन आउ तार रिलेटेड ऑप्शंस गुड़ाकर कौन से गुड़ाक कौन कहूँ आउ यही सब विषय टे डिस्कस करवा आउ आई विल गिव यू ए शॉर्ट एनालिसिस दैट हाउ you should read the NCERT and bureau books. Okay, so first question hoche according to the binomial system of nomenclature of plants, each plant name consists of two parts. Okay, binomial nomenclature रे कहूची गोटे प्लांट जदि हम नामकरण देखिबा ताले दीटा पार्ट हम कंसिस्ट करची. which of the following is one of those? एई चारिटा ऑप्शन भितर कोटा जोटा से गोटे माने जो दीटा नामकरण रोचे से दीटा नामकरण रु ये चार्टा ऑप्शन रु कोटा आम कंसिस्ट करुच्ची से नामकरण भितर. सो फर्स्ट ऑप्शन होची जेनस, सेकंड होची ऑर्डर, थर्ड होची क्लास, फोर्थ होची हमर कोन ना फैमिली. ओके, सो आम जदि देखिबा एनसीईआरटी रो पिक्चर कट को सेठी देखिबा जे बायोलॉजिस्ट follow a universally accepted principle to provide a scientific names known as organism to known the organism. Each name has two components, data component, the generic name and the specific epithet. The system of providing a name with two component is called as the binomial. So ये जो data component होची सेट पे हमें तक होची binomial nomenclature. This naming system is given by कहाँ पे कहाँ किए देची ना Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. Okay, so this naming system using a two-word format is found as convenient. Let us take an example of a mango to understand the way of providing scientific names in a better way. The scientific name of the mango is written as a Mangifera indica. So the scientific name of a mango is known as Mangifera indica. Okay, so से कौन कहूँ तापरे ना in these main Mangifera represents the genus. Okay, so Mangifera टा कौन को हमरो represent करूची ना Mangifera टा represent करूची genus represent करूची आउ indica, while indica is a particular species or a specific epithet. आमे इट कहूचे ना binomial nomenclature रे एटी देखो binomial nomenclature रे दीटा common component अछि. कौन कौन component? गोटे generic name आ गोटे specific epithet. से जेहेतु दीटा अच्छी तेणु आम कहे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर माने नेमिंग. अच्छा, या किए बाहर किए प्रैक्टिस माने आमर आनी किए से ना यहाँ हूँ आमर कौन ना कैरोलस लिनियस को इंट्रोड्यूस करथिले. दिस नेमिंग सिस्टम इज यूजिंग टू वर्ड फॉर्मेट सो दैट इट इज बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. गोटे हूँ जेनस आ गोटे स्पेसीज. टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ मैंगो मैंगो जो एग्जाम्पल इट इज ए कॉमन नेम. सो यार ये कौन साइंटिफिक नेम कौन ना मैंगीफेरा मैंगीफेरा इंडिका. ओके, सो मैंगीफेराटा कहूँ यहाँ जेनस आ इंडिकाटा हूँ यहाँ कौन ना स्पेसीज. ओके, so other universal rule of nomenclature are as follows. So तार रूल किछटा अछि सेटा तमे देखि पारिबो बट एबे ब्यूरो कोन कहूची देखिबा. ओके, रूल्स अछि कोन हमर जेमती जदि हम रूल्स को देखिबा कोन हमें जनरली लैटिन ने लिखा दे हला इटैलिक्स. सो जेहेतु एटा डिराइव्ड है जनरली इन लैटिन सो हमें एटको इटैलिक रे लिखो और वी कैन से दैट एको हमें अंडरलाइन करी लिखो. द फर्स्ट नेम ऑफ बायोलॉजिकल नेम इज कौन आम जो फास्ट वर्ड जो लिखा मैंने एटार फास्ट वर्ड कौन अच्छे मैंगीफेरा. ओके, सो रिप्रेजेंट्स जनरल व्हाइल सेकेंड एटा सेकेंड कौन कर इंडिका को रिप्रेजेंट कर. बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन जदि आम आमर कौन एमती लिखुने. ओके, इटालिक रे लिखुने ताले आम कौन करवा ना मैंगीफेरा लिखा आउ अंडरलाइन करवा इंडिका लिखा
आउ अंडरलाइन करवा बुझीगला तो यहाँ तार देयर आर डिफरेंट रूल्स आर देयर ओके द फर्स्ट वर्ड डिटोनिंग जेनर्स starts with a capital letter and the specific epithets with a small letter so तार किछटा ये अच्छी रूल्स अच्छे से रूल्स गुड़ाक आमको मानिक लिखा पड़ो जेनस और स्पेसीस है सो एबे आम कौन क्वेश्चन आउ थे कहे देखा क्वेश्चन हाँ आज ब्यूरो देखा प्रथम आज फॉर द फ्रेम गाइडलाइन ए साइंटिफिक नेम इज गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स the first part of the genus and generic name while the second part is the species or specific name. The system assigning names with the two parts called binomial nomenclature which is proposed by Swedish naturalist Carlos Linnaeus. तो बड़े बड़े पकाए जाए यार nationalism कौन ये Swedish है so for this contribution to the field of nomenclature and classification Linnaeus is referred to as the father of taxonomy and some of the important rules of binomial nomenclature are mentioned below किस रूल अच्छी अच्छा सो ये कौन कौच आमर कौन गोटे हूँ आमर ये binomial nomenclature गोटे जेनस आ गोटे स्पेसीस यस सर नो गोटे जेनस थाए आ गोटे स्पेसीस थाए अच्छा स्पेसीस तो नहीं ये सो आंसर कौन हम यार जेनस दिस वन विल बी द आंसर यस सर नो अच्छा सो द चैप्टर ये कौ चैप्टर आसी ना लिविंग वर्ल्ड चैप्टर रू आसी है ना लिविंग वर्ल्ड चैप्टर रू आसी आउ लेवल तो बहुत इजी है ना जानते जेनस स्पेसीस सब आम जेनराली आम जिते बड़े गोटे साइंटिफिक नेम कौचे कौन से प्लांट एनिमल आम जेनस स्पेसीस कहे सो जेहेतु स्पेसीस ना जेनस इजी क्वेश्चन सो अच्छा आम जो देखा कौन ना मनकर टेकिंग एज एग्जांपल ये गोटे मैंगोर एग्जांपल नहीं सो मैंगोर एग्जांपल को जब आम क्लीयरली टिके स्टडी करवा केमी क्लासीफाई है सो क्लासीफाई इट्स लाइक हाँ तो आम देखा यहाँ कौन मैंगोटा कौन आम यहाँ कहे मैंगो यहाँ कौन आम कमन नेम ये सर नो कमन नेम अच्छा ये मैंगीफेरा इंडिका को आम कहे साइंटिफिक नेम ये सर नो और यू कैन से दैट इट इज ए बायोलॉजिकल नेम सर नो जोटे तुम एनसीईआरटी अच्छे मुझे लिखुची बायोलॉजिकल नेम ओके अच्छा देन स्पेसीस तो जान ये इंडिका स्पेसीस ये लिखिनी ओके स्पेसीस कौन आमर ना इंडिका ओके अच्छा ये आस ये मैंगीफेरा कौन ना हूँ मैंगीफेराटा हूँ जेनस ओके फाइन आम लिखी ये मैंगीफेरा इंडिका देन आमर आसला कौन ना यहाँ हूँ फैमिली ओके देन ऑर्डर देन क्लास डाइकोटिलेडन हूँ क्लास देन एंजियोस्पर्म यहाँ हूँ फाइलम और डिविजन सो आम एमती ही पढ़िया प्रथम डिवीजन देन क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस स्पेसीस ये कॉमन नेम आ बायोलॉजिकल नेम हो अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीस और टैक्सोनॉमिकल हिरार्की रे टिके किछटा क्वेश्चन आसुची एवं यार रिलेटेड जेहेतु मुझे स्लाइड से नहीं से कौन कहूँ ना किंगडम इज ए लार्जेस्ट टैक्सोनॉमी ग्रुप ये जो यहाँ को पढ़े यहाँ को तो मुझे कहली यहाँ को डिस्क्राइब करने यहाँ स्लाइड रखी सो किंगडम इज ए लार्जेस्ट टैक्सोनॉमी ग्रुप it is divided and subdivided into groups subgroups based on the true relationship for example the kingdom animalia is divided into 11 animal phylum so each phylum is divided into 2 or more classes and each classes to be more orders and so on the ultimate and invisible unit in the system is the species last thing I species dekhu however on rare occasion the species is divided into subspecies or varieties each of these ranks have a taxonomy classification is known as taxonomy category or taxa I generally call when all the taxonomy category are arranged in a descending order it forms a taxonomic hierarchy ये जो टोटल ये जो आम देखुचे यहाँ कौन गोटे हिरार्की किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस स्पेसीस ये गोटे हिरार्की ओके सो इन दस द किंगडम इज द आम जो देखा ये ना किंगडम इज द लार्जेस्ट कैटेगोरी आ स्पेसीसटा हूँ सबुठ स्मॉलेस्ट ये जो आम टैक्सोनॉमिकल हिरार्की रे स्पेसीसटा सबुठ कौन स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट लेवल अच्छी आ किंगडमटा सबुठ
highest largest level ଅଛି. The following is a taxonomy hierarchy of exhibiting the important categories. Okay, so ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ kingdom, then division, then class, then order, then family, then genus, then species. Okay, fine. किस्ते जगह माने सब फैमिली सब क्लास थाए अधिक जदि ऑर्गेनिज्म से रोचे ताको इजीली क्लासिफाई माने ठीक से क्लासिफाई करने एवढा सब ग्रुप्स रे भी डिवाइड होता है. अच्छा, टैक्सोनॉमिक ऑफ सिस्टमैटिक्स भितर डिफरेंस कौन ना टैक्सोनॉमी कहूँ इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. टैक्सोनॉमी कौन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. So it concludes that this makes a detailed scientific study of characters, both external and internal, of an organism to find out a similarity and the study of and the dissimilarities with others. Okay, so external और internal character को अनुधान करुचे हमें और find out the similarities and the dissimilarities with others, which is essential for its classification. The modern taxonomic study also considers the structure of the cell, chromosome, genes, molecular features, embryonic development, ecology, etc. for distinguish between the closely related organisms. Taxonomists make sure that organisms which do not share a common ancestry are not classified under the same group. Okay, so Charles Darwin proposed that all organisms existing on Earth share a common ancestry. Taxonomy is the older branch of the study than the systematics. Then also systematics कौन कहूँ ना other hand systematic deals with the evolutionary relationship that exists between different groups of organ. Evolution ने कौन आम relationship रही सेटा को ये justify करुच्ची. It tries to determine the organism or groups of organism which share a common ancestry. It is concerned with the quantum of evolutionary changes that may have occurred among different ancestors. The word systematic has been derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of the organism. Linnaeus titled one of his books as system. So, system nature को क्या लिखते हैं ना Linnaeus लिखते हैं. That enlisted about how many species? 10,000 species of animals and plants. The scope of systematic at present not only included the work of taxonomy but also consists the establishing relationship between the organism from evolution point of view. Evolution point of view रे हमें justify करुचे यार characteristics आउ कौन यार relation अच्छी आउ other organism सहित. This helps us to form the phylogenetic tree of life and understand the evolutionary history of the life on the earth. से जो particular species रो phylogenetic tree माने hierarchy देखियो हम जदि कौन कहाँ सहित केमिति phylogenetic relationship अच्छी आउ understand the evolutionary history कौन यार evolution केमिति यार evolution है अच्छी ए species ता तार हिस्ट्री आम जो देखा तो आम यहाँ सिस्टमेटिक्स को आम रिलेट कर. ओके, दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन, हु प्रपोज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो समस्त जान इट इज R.H. Whitaker. So R.H. Whitaker proposed the 5 kingdom classification. This is his photo. Looks great. The kingdom defined him were named as Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The main criteria बड़े बड़े criteria ही पचारे को basis से classification है on which basis the classified system kingdom classification है is used by include the cell structure, body organism, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship है ला ये जो जिनसटा टिके important बहुत हमारे पचारे body structure, body organism, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic which is not the basis पचारे which is not the basis of not the basis of a 5 kingdom classification. Okay, not the criteria of a classification 5 kingdom classification. पचे तो ए तीनटा रखिथिबा आ गोटे रखिथिबा. So कोन ना body organization, mode of nutrition, reproduction of phylogenetic relationship. Okay, so 5 kingdom system of classification नाम देखिबा जदी Original American taxonomist Robert H. Whitaker proposed the 5 kingdom system of classification of the living organism year 1969. The system was based on the 3 criteria: cellular organization, cells may be prokaryotic or eukaryotic,
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन कहूँ ना द ऑर्गेनाइजेशन विथ यूनिसेलुलर और सिंपल स्ट्रक्चर टू मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी मोड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक okay ecological role of the organism also now taken into classifying the world of living beings so एगुड़ा सब consider करा जाइए को कौन classify करिया पड़बो the system classifies the organism into 5 kingdom namely monera protista mycota माने फंजी कम कहूँ प्लांटी और एनिमलिया कौन ना मोनेरा प्रोटिस्टा माइकोटा फंजी प्लांटी और एनिमलिया ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन केमती ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इकोलॉजिकल रोल ऑर्गेनाइजेशन कौन है ना आमर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑन न्यूट्रिशन बेसिस ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक सो देन प्रोड्यूसर जो आम इकोलॉजिकल प्रोड्यूसर ना कंज्यूमर्स देन किंगडम विथ एग्जांपल कौन है प्रोकैरियोटिक को एग्जांपल यूकैरियोटिक कौन एग्जांपल नहीं देन प्लांटी एनिमलिया ओके देन डिकम्पोजर माने इकोलॉजिकल रोल कौन कौन एग्जांपल नहीं देन आम ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देन कम्स टू द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन 2 किंगडम 3 किंगडम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन से आम जब देखा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है सो फास्ट जो स्टार्ट है 2 किंगडम देन 3 किंगडम देन 4 किंगडम देन 5 किंगडम आम जोटा ए देखिले जे आर.एच. व्हाइट कौन करते आम 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन थी देखा ओके बड़े बड़े पचारे क्वेश्चन किए को इंट्रोड्यूस करते सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो देखा ऑल द डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्लेस इन 2 मेजर ग्रुप 2टा मेजर ग्रुप आम रखी गोटे है प्लांट आ गोटे है एनिमल्स फ्रॉम द वेरी एंशिएंट टाइम्स ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल एंड इज डिसिप्लिन एंड इट स्टूडेंट एरिस्टोटल आउट स्टूडेंट कौन ना थियोफास्टस अंडरलाइन द इंपोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंपोर्टेंस माने व्हाई वी शुड क्लासिफाई दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म ताको इंपोर्टेंस बुझी दे क्लासिफाई द प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सब ग्रुप्स इन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग देम Carolus Linnaeus who is known as the father of modern botany and also the father of taxonomy divided all the organism into kingdoms such as Plantae Animalia on the basis of certain structural and functional characters. For example, the plant cells have a cell wall that exists the outer plasma membrane. Generally, the plant have the ability to synthesize their own organic food. All the higher plants by the large static and have no ability to move from one place to another. Further, the plants are less responsive to external changes of their environment. Then comes to animal. Animal kingdom lack the non-living component of the cell called as a cell wall. Cell wall nahi. They do not synthesize their own food and hence they are dependent on the plants for their food. Okay. So directly or indirectly, directly or indirectly plant upare based. The animals therefore are heterotrophic. Animals move about freely for the various purposes like food, shelter, etc. Okay. The characters are separate from the plants. आम जानी कौन कौन कैरेक्टर्स हम डिफरेंट ओके सो आम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो देखा आम ये एरिस्टोटल और थियोफास्टस को देखा ये एरिस्टोटल थियोफास्टस को अंडरस्टैंड करते देन कैरोलस लिनियस जी थे से कौन करते ना हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी ओके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखिए जदि आम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को किए इंट्रोड्यूस करते ना सीए कैरोलस Carolus Linnaeus. Okay. So 3 kingdom classification. So it was proposed by a German zoologist Ernst Haeckel. The system of classification is based on the morphology, tissue system, nutrition, pattern and functioning of a different part of the body of the living organism. Okay. He divided the living world into 3 kingdoms such as Protista, Animalia, Plantae. Okay. ये को हमें कौन करते Protista को गोटे first time पे introduce करते थे. All the unicellular organisms are kept under the kingdom Protista, which included fungi, protozoans, algae, and bacteria. So, a separate kingdom Protista was created to accommodate all the microbes and certain other organisms which do not fit to the plant or animal food. First time, जेत कौन आमर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा भितर 3 किंगडम सिस्टम रे पकाई देथिले एगो किए करथिले ना अर्नेस्ट हैकेल ओके सो अर्नेस्ट हैकेल ओके कि इंट्रोड्यूस करथिले सेटा इंपोर्टेंट बेसी ओके 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को आसीबा
So in this system of classification of the living beings, a new kingdom was added to the Haeckel's three kingdom system. Acellular prokaryote was given the status of a kingdom. The organism like bacteria, blue-green algae or cyanobacteria were included in it. The four kingdom were Monera, Protista, Plantae and Animalia. Now एठी कौन कला ना हमर कौन एठी कौन थिला एठी प्रथमे थिला फास्ट थिला टू किंगडम जे देखिबा टू किंगडम थिला एठी थिला कौन ना प्लांटी आउ कौन एनिमालिया जेतेबेले थ्री किंगडम हला सेतेबेले गोटे नुआ आसिला कौन ना प्रोटिस्टा ओके देन सेम प्लांटी आउ एनिमालिया ए जो प्लांट प्रोटिस्टा रे कौन रहिला ना आम प्रोटिस्टा रे रखिले केवल कौन ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मान को रखिले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मान को रखिले देन ओके फोर किंगडम रे जतल देखिबा हमें सो फोर किंगडम ने कौन आम मोनेरा को आनिले मोनेरा प्रोटिस्टा मोनेरा प्रोटिस्टा सेम प्लांटी आउ एनिमालिया यस नो ओके ए प्रोटिस्टा रे ए मोनेरा रे हमें कौन रखिले ना बैक्टीरिया मान को रखिले ओके दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ए जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन टा कौन कहूची ना जे प्योरली बेस्ड ऑन द cell organization and mode of nutrition. Monera comprise of acellular organism with no true nucleus. Their modes of nutrition were variable, being autotrophic and heterotrophic. However, a single cell multicellular eukaryotic organism like algae, fungi, protozoans were included under the protista. Again, the mode of nutrition of these organisms are variable, autotrophic and heterotrophic, absorptic and endozoic. Okay. So the plantae comprise of eukaryotic multicellular autotrophic organism. The organism with similar cellular organism but heterotrophic nutrition are placed under the algae. Okay. But गोटे कथा तुम देख द फंजी टाकू हमको गोटे प्रॉपर किंगडम हमको मिलूनी तो फंजी जो नुआ कंप्लीटली डिफरेंट किंगडम है कि आसला से कौन आसला हमर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सो आम देखिले से कौन मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी और माइकोटा प्लांटी और एनिमल सो फंगी ये चारिटा किंगडम जिते जो टू किंगडम थ्री किंगडम और फोर किंगडम रे फंजी को गोटे जुडिशियल किंगडम मिलू ना बट फंगी को आम गोटे माने प्रॉपर आम जगह मिलू ना फंजी कौटी ओके फाइन फंजी को प्रथम थ्री किंगडम रे हमको रखिले प्रोटिस्टा रे देन ताको आम बाहर करदेले प्रोटिस्टा रे बाहर करके आम फोर किंगडम रे पुणी प्लांटी को इंट्रोड्यूस करदेले सो फंजी इज नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट प्लेस सो आम कौटी पाइले फंजी तार ये ना आमर फंजी पाइला तार ये ना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ने गोटे कंप्लीटली इट्स ए डिफरेंट कौन किंगडम है कि इंट्रोड्यूस है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द आर.एच. व्हाइट. So this is the fundamental things. So when you will go through that, you will get to know what algae पढ़िबो, then means plantae पढ़िबो, then animalia पढ़िबो, then ए सब गुडा को परे पढ़िबो. Then question number 3, which is not a characteristic features of a gymnosperm. Gymnosperm रो कोन कोटा इथिर गोटे कैरेक्टर नुह. अच्छा तो देखिबा जिम्नोस्पर्म रो कैरेक्टर नुह ताहाले हमको प्रथमे आर्किगोनिया लैक नैकल सेल कैनल सेल्स. Pollen grains fall on the stigma, germinate and produce pollen tubes. Xylem vessels are absent. Phloem lacks companion cell. अच्छा पढ़िया कौन लिखी ब्यूरो रे. The word gymnosperm was used by 300 BC by Theophrastus, a pupil of Aristotle. So in his book Inquiry into Plants, he used to term embrace to all those plants whose seeds are unprotected. जोड़कर seeds गुड़ा का cover न था. The gymnosperm, gymnos means naked, sperm means seeds. Okay, are the plants which
The ovules are not enclosed by the ovary wall. No ovary is present in a gymnosperm, so the seeds developed from the ovules are naked and remain exposed before or and after fertilization. The gymnosperm and angiosperm are the grouped under spermatophytes. Okay. So characteristics हम देखिए वाला. Gymnosperm are found the surface of the globe, mostly high altitudes. They are evergreen. Some are deciduous, woody, xerophytic, and include medium size to very tall tree. And so, one of the tallest is a sequoia plant which lives for 4,000 years. Okay, gymnosperm formed dominant vegetation on the earth about 200 million years ago and later replaced by the angiosperm. Some of them lived thousands of years, gymnosperm, and today represented by the 70 living genera and 725 species. अच्छा, एटी कौन पढ़िबा? The main plant body is well differentiated sporophyte. Dominant phase of life cycle, it is sporophyte. Our gametophyte कौन? Now is very much reduced and remains within the sporophyte. The gametophyte is fully dependent on the sporophyte. अच्छा, these perennial woody trees have stems, may be unbranched like cycas or profusely branched like pinus, and leaves, foliage leaves or scale leaves are well adapted to tolerate extreme temperature, water scarcity, and the wind. The pinnate leaves of cycas persist for few years. The needle-like leaves of pines, the sunken stomata, and the thick cuticle help to reduce water loss, like so that it is present in the xerophytic conditions. So roots are the tap roots, and in some genera in Pinus have fungal association in form as a mycorrhiza. So in cycas, okay, so in cycas, small specialized roots called coralloid root associated with nitrogen fixing cyanobacteria are present. ଏଇଥିରେ ତିନିଟା क्वेश्चन ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଇଛେ. ଓକେ, ସଙ୍କେନ୍ ଷ୍ଟୋମାଟା କେଉଁଠି ମିଳୁଛି? ଓକେ, ଆମର କ'ଣ ନା ମାଇକ୍ରୋରାଇଜାଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ କୋରାଲଏଡ୍ ରୁଟ୍ ଏଇଟା ତ ବୋଧେ ପଡ଼ିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କି କ'ଣ, ତୁମେ ଦେଖିବ କୋରାଲଏଡ୍ ରୁଟ୍ଟା କେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି. ଓକେ, ତ ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ ଦେଖ এইটিকিনা কই. The vascular tissue are arranged into the bundles just like angiosperms. Angiosperm ভলিয়া same arrangement. However, xylem does not have vessels. Xylem vessel carry করেনি. Phloem with no companion cell. Phloem ର companion cell ଅଛି except in genitum. So genitum ଛଡ଼ା ନା xylem ପାଖରେ vessel ଅଛି ଆଉ ନା phloem ପାଖରେ companion cell ଅଛି. So option 2 and option 4, sorry, option C and D is not according to the question. Xylem vessels are absent. Phloem lacks companion cells. Not the characteristic पचारछि. Okay. अच्छा, देखो आ गोटे आर्किगोनिया lack neck canal cells. This is not also. दीटा को xylem vessel present अछि हला. However, xylem does not have vessel. Okay, xylem vessels are absent कहिछि एठी. ठीक अच्छे এটা মানে এটা জিমনোস্পার্মর ক্যারেক্টারিস্টিক্স. Phloem lacks companion cell only in the genitum except the genitum. Archegonia lack canal cell. Okay, এটা भी ठीक अच्छी. Pollen grains fall on the stigma, germinate and produce pollen tubes. এটা কোটি हुए हमरो angiosperm रे हुए flower bearing plant. Okay, so stigma कोई कथा जो कोई germinate and produce pollen tube एटा ही हमरो आंसर. Pollen grain fall on the stigma, germinate and produce pollen tubes. ଟିକେ ମଡରେଟ୍ क्वेश्चन ପଚାରିଛି. ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ. ଓକେ, ସୋ ୱି ୱିଲ୍ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାଟର ପାର୍ଟ. ଓକେ, gymnosperms are heterosporous. They produce two kind of haploid spores. Okay, गोटे आम कौन माइक्रोस्पोरांजिया गोटे मेगास्पोरांजिया. माइक्रोस्पोरांजिया को आम कहे मेल आ मेगास्पोरांजिया को आम कहे फीमेल. ओके, तो सही कथा कही फीमेल कौन कनसिस्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल व्हिच बियर द एक्सपोज मेगास्पोरांजिया कॉल्ड ओव्यूल्स. देन पोलन ग्रेन एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल, produce pollen tubes which grow towards the archegonia and discharge the two male gametes near the mouth neck of archegonia. The pollen then आम जदि देखा देन जिम्नोस्पर्म क्लासिफिकेशन ये देख आम साइकास देखुचे, कोनिफर्स देखुचे और जेनेटम और अलाइड प्लांट्स देखुचे. ओके, साइकोस्पिडा, कोनिफेरोस्पिडा आउ जेंटोस्पिडा. सो जेनेटम अलाइड प्लांट्स, कोनिफर्स और साइकास देखुचे आम ये
एटा क्लासिफिकेशन है विल स्टडी इन द लेटर जितेबाला आप थ्योरी पढ़े से जापर क्वेश्चन नंबर 4 पचारूँ व्हिच आर द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंडेंजर्ड प्लांट देखो किछिटा क्वेश्चन हमको एलिमिनेशन द्वारा करने को पड़ो है ओराइजा सैटिवा यहाँ तो जान सब जगह मिलूँ प्राय पैडी जेनराली यहाँ तो एंडेंजर्ड नुह अच्छा देन ये जो ट्राइगोनाफोएनम ग्रेसियम देखी यहाँ हूँ मेथी जेनराली आम जोटा यूज करुचे डिफरेंट एज इन फूड ऑल्सो इन सम मेडिसिनल वे ऑल्सो आम मेथी को यूज करुचे यहाँ ऑल्सो एंडेंजर्ड नुह मिलूँ सब जगह अच्छा कानोसिरी जानी थो ओके कम्बेलिना दैट इज कमेलिना बेंगालेनिसिस ओके এটা कानोसिरी ओके तो कानोसिरी देखी तो सब प्राय सब जगह मिल जाए ये जो झिंका यहाँ देखुच ओके व्हाइट मुसलिया को कहती भी मेनी पीपल्स जनरली इन हिंदी व्हाइट मुसलिया को कहते ओके सफेद मुसली यहाँ हूँ आमर एंडेंजर्ड ओके क्लोरोफाइटम माला कौन कहते मालावेरिकम ओके मालावेरिकम ओके क्लोरोफाइटम मालावेरिकम और झिंका जनरली दिस इज द मोस्ट एंडेंजर सो दिस विल बी द आंसर जब टिके आमको कौन करने अच्छी ना आमको एलिमिनेट करने अच्छे 5 क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच आर द पार्ट ऑफ एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम कोटा आमर एनाटॉमी नुह वास्कुलर टिश्यू कॉर्टेक्स पेरिसाइकल एपिब्लेम एनाटॉमी ऑफ स्टेम देखा है देख कोटा पचारि क्वेश्चन पचारि व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम कोटा स्टेम एनाटॉमी पार्ट नुह डाइकोट स्टेम एनाटॉमी पार्ट नुह जनरली यहाँ कौन आमर यहाँ कौ टपिक आसूँ एनाटॉमी ओके सो ये देख कौन कही सो जनरली स्टेम formed the aerial part of the plant. It has a characteristics of internal organization. The stem performs the various function of each function is carried by a different tissue. The detailed anatomy of stem can be studied on two headings such as dicotyledon stem and monocotyledon stem. But common anatomical feature कौन ना epidermal hair are mostly multicellular. Cortex is differentiated into zones. Vascular bundle are conjoined, collateral, bicollateral or concentric. Xylem is endarched. Hello. Common anatomical features of dicot stem कौन कहूँ ना cortex is divisible into different zones. Hypodermis is usually cholenchymatous. Vascular bundles are arranged in a ring. Vascular bundles are conjoined, collateral and open endarc. A distinct pith is absent. But root रे देखिबा कौन ना anatomy of root ना outermost layer is known as a epiblema or a piliferous layer. Okay. It is not covered by the cuticle, but in case of a root stem, it is by the cuticle. Epidermal hairs and root hair are unicellular. एटी कौन थला multicellular थला. Hypodermis एटी absent अच्छी. एटी cholenchymus अच्छी. Cortex is a broad zone अच्छी. Endodermis with a characteristic of a Caspian strip which occur outside of the vascular bundle. Vascular bundle are radial. Xylem is exarch and a detailed anatomy of a dicot monocot. अच्छा. एटी देखो कौन कही छी. Vascular tissue हमर कौन अच्छी अच्छी. Cortex अच्छी. ओके पेरिसाइकल अच्छी एपिब्लेमाटा ना सो नॉट ए पार्ट ऑफ जब देखा ताले हमर कौन एपिब्लेमा ही आंसर हो ओके देखो यार स्ट्रक्चर मुझे रखी टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम ये देख ये क्यूटिकल प्रेजेंट अच्छी ओके क्यूटिकल प्रेजेंट अच्छी क्यूटिकल एपिडर्मल हेयर आसी मल्टीसेलुलर एपिडर्मल हेयर ओके बट इन केस ऑफ डाइकोट रूट रे ये कौन ना यूनिसेलुलर हेयर आसूँ आउ कौटू रिलीज हो यहाँ एपिब्लेमा सो इट जनरली एपिब्लेमा हेल्प्स इन द वाटर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो ओके सो यहाँ कौन एपिडर्मल हेयर क्यूटिकल ये राइज हो एपिडर्मल हेयर एपिब्लेमा सो यहाँ कौन एपिब्लेमाटा कहार पार्ट एनाटॉमिकल पार्ट कहार रूट नॉट कि स्टेम सो आंसर विल बी कौन एपि व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम epiblema is the answer. So these are 5 questions which is discussed today. So in the next video so we'll have another 5 questions from the last SSB TGT 2024 in a detailed way like this. We will do the next class. Okay, so for today this is stopping over here. Thank you.